हाँ तो सर interesting time in the football season because a lot of interesting matches coming up and there is a also little bit you can say कि drama happen in ISL also. तो ISL ड्रामा से स्टार्ट करते हैं फिर जो इंटरेस्टिंग मैचेस है उसका बात करेंगे. तो केरला ब्लास्टर मैनेजमेंट वर्सेस फैंस दिस इज द हॉट टॉपिक. जितना आईएसएल मैचेस का बात नहीं हो रहा है उतना ये इस चीज का बात हो रहा है. उसमें हर एक दिन कुछ नया हमें कुछ मैनेजमेंट की ओर से कुछ मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉइज है उनकी ओर से एंड इधर यहाँ पे मांझा पड़ास और उन सब की ओर से कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम दिख रहा है. सो व्हाट्स योर ओवरऑल टेक एंड फ्रॉम द क्लब्स पर्सपेक्टिव, नॉट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, नॉट फैंस पर्सपेक्टिव, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? क्या लगता है आपको कि इज इट गुड, इज इट बैड और व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो? Hiren, for this section, I think we needed Furious Harry. Because मैं directly बोलता हूँ आपको ना, that because for me, I always say Kerala Blasters has been a success story of the Indian Super League. Period. लेकिन also I have to say that management इतने गलती किया in the last 2-3 years. Too many mistakes in the management. But दूसरे साइड में I have to ask the fans, be it Manjapara or anybody else जो boycott के बारे में बात कर रहा है, that is boycott of your own team which could get relegated and then might disappear from the face of the earth. Is that the solution? So मेरा अबिक का criticism very simple है. एक point simple है मेरे के लिए. But if I want to criticize Abik, you came in and said, listen, I want free, fair discussion, conversation, yeah, whatever. Right? You were open on Twitter. You created a fan forum. All good. Ideas is nice. Reality mein, if you are working in a club setup, the fans cannot know what is happening within the club. And it is not a Blasters issue. Anywhere in the world, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हो या बार्सा का फैन हो या बायर्न म्यूनिख का फैन हो, you do not actually factually know what is really happening inside the club, despite all ये media channels, तुम्हारा transfer news, ये सब everything. No, you cannot. बट सर इसमें जो आप जो मैनेजमेंट का या फिर जो आप इंटेंशन की बात कर रहे हो, अगर मैं फैंस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो जो बॉयकॉट भी कर रहे हैं इट्स अ वे ऑफ प्रोटेस्ट. एंड दूसरा चीज जो आप बोल रहे हो कि फैंस को पता नहीं चलना चाहिए कि व्हाटएवर इज हैपनिंग, बट फैंस भी तभी यहाँ पे इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना कि जब आपकी टीम इतना बुरा कर रही है. और ये चीज सर आप एक तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि केरला ब्लास्टर के मैनेजमेंट ने जो चीज यहाँ पे जो लोगों के सामने या फिर फैंस के सामने वो चीजें रख रहे हैं उस हिसाब से आपकी टीम का जो ओवरऑल, जैसे आपने बोला कि पिछले 2-3 साल में जो परफॉर्मेंस है या फिर पर्टिकुलरली दिस ईयर, आप देखिए बाकी जो क्लब्स है कि जिसमें कोई फॉरेनर नहीं खेल रहा, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अनेसी या फिर बाकी जो क्लब्स है ओडिशा एफसी की जो लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे टीम इकट्ठा करके खिला रहा है, एक एक दो फॉरेनर्स के साथ आप देखिए टीम अच्छा कर रही है. तो आपका क्लब में ऐसा क्या है कि भाई बिल्कुल ये चीजें फेल हो रही है? तो कहीं ना कहीं कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना फेलियर के लिए. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा है? आई थिंक फैंस का जो गुस्सा है वो ज्यादा उस चीज पे है कि भाई जो बंदा यहाँ पे फेल हो रहा है आप उसको क्यों नहीं यहाँ पे अकाउंटेबल कर रहे हो? Hiren, 100%. But the question is, Indian football में कौन accountable होता है? That is the bigger question. Yeah, that is the first question. I take my own example. 2014 जब ISL शुरू हुआ and I set up with a lot of other people Mumbai City. I still say to this date, on paper, we had the best team in season 1. I sat on the drafts. I put the squad together. Right? मैं तो resign करके छोड़ दिया because I was not happy with myself. Right? I took accountability in 2014 saying, right, I set up a team. It did not succeed for multiple reasons. But I took accountability. I introspected, said, okay, I'm going. Because I was not happy with my own performance and certain decisions which I took, which afterwards is always easier to say, "Are ye to karke, wo karke." Things could have been different. It's always easier. But if you're in the moment to take certain calls, there are 2-3 key decisions
which I would have taken differently. That is my point to the Blasters management, saying, listen, you're trying to be open. Also, you took a gamble. You have had now problems with your coaches over the last 3 years since Ivan Vukovanovic went. But you also, as club and fans and management, did not say that the walkout against Bangalore FC galti the. True. Your introspection as Kerala Blasters as a club starts on that day in the ISL playoffs. Aap chhod ke chala gaya. You didn't do that. Be it management, be it club, be it fans. Right? Fans. True. Thereafter, the club management brought in players here and there, whatever. It hasn't clicked. This year, you took a massive gamble. You signed 6 foreigners with no ISL experience. Huh? And what now is public domain? A lot of players have come to you for free. वो सोच रहे next, if I perform well, next season में कुछ मिलेगा. मिलेगा. But players, yeah, Jacob Tongo to me didn't look fit. Marlon Roos Trujillo, who I've seen in the past as a 17, 18, 19-year-old here in Germany, ये तो shadow भी नहीं है उसका. Very honestly. That is the reality. You saw in 1 or 2 occasions the boy can play football, but professional football, bhai chhod do. Honestly. Now, you realize you had to act. What did you do? You brought in an ISL experienced coach to change the situation. And then I say, Manjapara, boycott is time pe acha nahi hai. Find creative ways of protest. Social media protest not enough. Try and interact. I know it is very difficult to interact. And Magnum Sports का जो बोल अरे आप तो if करना नहीं चाहते हो छोड़ दो. कौन देगा? कौन खरीदा? There is no buyer in the market. Success or failure doesn't matter. So all these points are interlinked. And this that the Blasters is the only ISL team, so to say, to have never won anything. Yes, that is brutal. But if I look around the world, how many clubs actually win something in the end? But if you see from that lens of not winning a trophy in last 11 years, I think that is the main I would say कि instigating point कि भाई 11 साल से वो I think जो ओवरऑल गुस्सा है ना वो कहीं ना कहीं उसका भी एक कल्मिनेशन है. अदरवाइज आई थिंक अगर पास्ट में कुछ ना कुछ जीता होता, मैं नहीं बोला आईएसएल ट्रॉफी, इवन आपने सुपर कप भी जीत लिया होता, तो अभी थोड़ा सा आई थिंक वो जो फैंस का गुस्सा है वो होता है. आई थिंक एक चीज और है सर कि हमें फैंस के सुपर पर्सपेक्टिव कप से छोड़ आप बोल दो, हिरेन सुपर कप छोड़ दो, इवन डूरन कप जीतते, कुछ ना कुछ तो जीतते, कुछ जीतते. एग्जैक्टली. एंड दूसरा जो मैं लास्ट पॉइंट इस टॉपिक में बताना चाहूंगा कि जो फैंस का जब सर इस तरीके का एक आप बोल सकते हैं कि जो गुस्सा होता है उसमें फिर वो डायरेक्शन लेस होता है, उसको फिर वो आप वो उस तरीके से यू कैन से कि लॉजिकली या फिर जस्टिफाइबल वे में आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे करना चाहिए. तो आई थिंक इन अ वे ये जो हो रहा है फॉर ओवरऑल क्लब्स पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि इट्स अ टफ टाइम एंड लेट होप कि फैंस एंड मैनेजमेंट दोनों यहाँ पे इस चीज को रियलाइज करें एंड जो क्लब के लिए बेस्ट है, क्लब के इंटरेस्ट में जो बेस्ट चीज है वो अगर उस एंगल से दोनों अगर यहाँ पे स्टेक होल्डर सोचेंगे देन आई थिंक देयर विल बी यू कैन से कि होप कि भाई आगे जाके केरला ब्लास्टर विल बी इन अ मच बेटर प्लेस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. one final thing. हाँ. The one thing that Magnum Sports as owners have to take onus of and also say, you have a great fan base. You're one of the few clubs who has had multiple sponsors over the years. But where was the intention to win? Huh? ठीक-ठाक team करते. Yes, you have been in a few finals in the past. But where was the intention to say, you know what, let's try and win something? Forget ISL. I have felt over the years that the Blasters have not taken the Super Cup or the Duran Cup seriously. Agree. Just as the final point. And that applies to the club owners, management, and even coaching staff and players. True. So moving on to the ISL, let's go to the
Premier League, sir. The bottling league, I would say, because Arsenal ने जो किया है, I think Arsenal can only do. No other club can do this kind of a thing. So जो अभी पूरा एक फैन बेस में जो बेंटर का माहौल बना हुआ है, बाकी सारे जो फैन बेस है प्रीमियर लीग के बाकी क्लबों के, वो जो एक अब चीज बोल रहे हैं कि आर्सेनल ने कर दिया बोतल एंड कल जिस तरीके से सिटी ने चेल्सी को हराया, उसके बाद लग रहा है कि भाई सिटी भी अपना एक जो रिदम है आफ्टर नॉकिंग आउट फ्रॉम द चैंपियंस लीग, वो उन्होंने वापस गेन कर लिया है इन दिस क्रूशियल फेज ऑफ द सीजन। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव बना है कि भाई कर दिया आर्सेनल ने बोतल एंड नेक्स्ट मैच आर्सेनल वर्सेस सिटी, आई थिंक इज गोना बी द डिसाइडर। सो क्या लग रहा है, कर दिया है बोतल या फिर अब क्योंकि देखिए सर, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में आपके बैक ऑफ द माइंड भी आता ही है एज अ प्लेयर एज अ कोच कि क्या भाई अब किस तरीके का यू कैन से कि इक्वेशन बन रहा है इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। See, Arsenal का problem क्या है? A few weeks ago, it looked like Arsenal could win 4 trophies. या But Arsenal now for the last 2 months have not been playing good जस्ट टू football. नहीं नहीं जस्ट टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या? ये जो आपने अभी केला ब्लास्टर का एनालॉजी बोला ना कि वो लोग ने सिर्फ आईएसएल को टारगेट किया, सुपर कप दुरान कप को नहीं किया, इन्होंने भी सेम किया सर। मेरे को ये लगता है इस सीजन की पहले कैराबाओ कप यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया, फिर एफए कप नहीं लिया, इवेंचुअली प्रीमियर लीग भी जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर से अगर चैंपियंस लीग से भी गए तो आई थिंक वो सेम चीज होने वाला है। See, Champions League हो सकते थे ना. I go back, हम्म which I think I don't know how many people really watched properly the matches against Bayer Leverkusen. In Leverkusen, Bayer needs to win 2-0 at least, if not 3-0. They should हम्म easily. And that penalty again. Indian football में VR का discussion होता है भाई. Europe में if Eberechi gets a penalty for that with no contact with VR, भाई VR का फायदा क्या है? So that again, we're having a different discussion in Europe as football fans in India. And then you say, as you said, League Cup, I think, was already a first show. City is getting back, especially Erling Haaland back amongst goal scorers. I think that was very important. City were not as bad as the result shows against Real Madrid. That has to also be ट्रू said. No? So critical moments. I mean, Freddy Valverde with a hat trick, kitne baar karega? Southampton, yeah. You brought on your better players in the second half, but Southampton is the team in form in the championship, right? Under a very, very young German coach. So, wo dekhte, look at it, and then Bournemouth, they were better than you. You lost at home at the Emirates deservingly, and also the win against Sporting was not convincing in the Champions League. So even आई एग्री। so all tournaments, all matches over the last few weeks and all, and City has shown that at the crunch time of the Premier League season, if need be, they can win all matches. Jurgen Klopp can tell you a lot of stories about that. एंड आई थिंक पास्ट में वो तो करके दिखाया है। उसके लिए problem that we have, and to me, yeah, the challenge remains. And as you say, City versus Arsenal, if City win and they have one match less, they would be same on points and most probably at that time ahead of Arsenal on goal difference. And for Arteta and the team, again, yeah, it would be insane. And then at the end of the season, Arsenal will have to ask the question, "Hey, listen, we have trusted in the process, we have trusted in Arteta. तुम रख सकते हो उसको, you have to sack the manager." No, that's a serious question. Yes, कहाँ absolutely. जाओगे? This is, I mean, Arsenal has done multiple bottle jobs. This is the worst. If you do not win the Premier League as Arsenal Football Club this season, तब छोड़ दो, नहीं होगा। छोड़ दो, हाँ। आई थिंक वो फिर उसको वो रियलिटी फेस करना पड़ेगा, एग्री कि वो एट द एंड ऑफ द सीजन यू हैव टू फेस कि भाई मिकेल आर्टेटा को सेक करना ही वुड बी द राइट चॉइस। बट डेफिनेटली नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक अगर आर्सेनल वर्सेस सिटी का ये मैच सिटी जीत जाता है, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि भाई लीग गो इन यू कैन से कि लास्ट गेम वीक कि वहां पे मे बी डिसाइड हो ऑन 1 पॉइंट और मे बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग। So that's interesting. प्रीमियर लीग तो अभी आप बोल सकते हैं कि इन अ रियली थ्रिलर पोजीशन की जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बट ला लीगा सर डिसाइड हो चुका है, बारसा 9 पॉइंट क्लियर एंड मैड्रिड डिस्पाइट साइनिंग वर्ल्ड
best player on every position. Back to back La Liga season, they are going trophyless. So, as a Barca fan, for me, I think it can't be you can say better than this. What's your thought on that? If someone like a Xabi Alonso fails, who you've seen Hmm. build a generic team at Bayer Leverkusen to remain unbeaten in Germany, who himself has played for Liverpool, Real Madrid, and Bayern Munich, Bayern Munich. Hmm. right? And whoever his coaches were will always say, "Oh, you know what? He was always my extended arm as a coach, as a manager on the field." Then Hmm. you see that there is already a problem. So it means that Real Madrid doesn't need a coach; they need a man manager, right? Hmm. And secondly, Real Madrid last 2 years क्यों नहीं जीता? Hmm. Toni Kroos, Luka Modric, and to some extent Casemiro. Your attacking line, ठीक है. Your mana defensive is a problem, right? I don't Hmm. even know how many centre backs and left backs have been injured or right backs have been injured over the last years with serious injuries at Real Madrid, right? So therefore, Hmm. that is a factor. Champions League, different conversation, but in the league, also Barcelona under Flick. I'll be very honest. Hmm. I mean, Hansi Flick has done brilliantly at Bayern Munich. Hmm. He was not good with the German national team. But to Hmm. go to FC Barcelona, In that situation, to huh? in that situation, rebuild the team, strengthen the team, and also play with all these young boys. Hmm. Hmm. And of course, especially look at Yamin Yamal or also someone like a Rafinha. Hmm. Rafinha was an average Premier League player at Leeds. He's Yeah. world class. Yes. You again use Robert Lewandowski, who was Hmm. your goal getter at Bayern Munich. So he has realized and recognized, and he's done exceptionally. He's Hmm. done brilliantly, and hats off. 9 points ahead now, 7 matches to play, but I think Barca, it's theirs. Just like my club, your club is also created a history in this Yeah. game week, and Bayern, I think कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया? 50-60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 1972, Bayern Munich scored 101 goals. So Hmm. 54 years later, Hmm. they broke the record of 101 goal and now stand at 105 goals from 29 matches. So that record up to 105 hai, that will, I don't know how far they can take it. But this Bayern Munich team is impressive. That, Vincent Kompany, when he came in, मैं सोचा देखना है क्या कर सकते हैं. Hmm. But Vincent Company, respect. एंड जिस तरीके से उसने ये चैंपियंस लीग का भी आप देखिए फर्स्ट लेग बर्नाबाउ पे जाके टीम ने खेला है, आई थिंक दैट शोज द करेज एंड द यू कैन से कि द एबिलिटी ऑफ द मैनेजर आल्सो बिकॉज इन दैट काइंड ऑफ अ गेम यू प्ले विथ योर आइडेंटिटी एंड प्लेइंग स्टाइल एंड द वे दे टेक ऑन द मैड्रिड. आई डोंट थिंक सो कि इट्स इजी. चाहे आपके पास कैसे भी प्लेयर हो, इट्स नेवर बीन अ इजी थिंग. एंड आई थिंक ये मैं इसको सिमिलर अगर मैं बोलूँ तो बारसा या हांसी फ्लिक के ऊपर भी ये बारसा फैंस ही खुद क्वेश्चन रेस करते हैं कि तुम बड़े गेम में क्यों यहाँ पे हाईलाइन क्रिएट करते हो. बट वो जो आपकी आइडेंटिटी या फिर जिससे आपकी टीम सक्सेसफुल हो रही है, व्हाई वुड यू वांट टू चेंज? एंड ऐसा नहीं है कि उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. सो आई थिंक द वे विंसेंट कंपनी, आई थिंक पर्टिकुलरली इन दिस सेकंड सीजन, the way he developed the team is absolutely brilliant to watch. I think बायर्न इज वन ऑफ द टीम जो मतलब एट द मोमेंट अगर आप यूरोप में देखेंगे तो एज अ न्यूट्रल फैन आई थिंक आपको उस टीम का मैच देखने में मजा आएगा. उस तरीके की फुटबॉल खेलते हैं. सो आई थिंक दैट आइडेंटिटी इज विथ But रिजल्ट इज but वेरी वेरी हार्ड टू क्रिएट. look at the team. I think, of course, you will speak about Harry Kane. There's a lot of conversation about Michael Olise, Luis Diaz, or even a Joshua Kimmich, so to say. Those are the players you speak about. Manuel Neuer at the Bernabeu, most probably. He himself said this was the best match in the last 3 years, right? And he was injured in the last 3 weeks before that. So that, not to forget that. But Tumara defensive unit, Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic doesn't get much mention. Right back, left back. Konrad Leimer, to me, one of the best right backs at the moment. Pavlovic doesn't get much mention. And then you've got the others who are coming and going out. Serge Gnabry, the best season of Serge Gnabry ever, most probably.
right? Hmm. Because Serge Gnabry won, अरे ये तो talent है, Arsenal पे थे, and then इधर Hoffenheim, Bremen, and then Bayern Munich में exceptional. That is a joy. The only thing that I think Bayern Munich का गलती था in Madrid, only winning 2-1, Hmm. I right? agree. In Hmm. the end, it could have been even a draw, but Bayern Hmm. Munich should have been 3-4 goals up before even in the first half. So that's the only Correct. thing. Therefore, but I think La Bestia Negra is what the Spanish fans call Bayern Munich, the Black Beast, is finally Hmm. back, and hopefully they will finish off the job and reach the semi-finals of the Champions League. आपने अब सेमीफाइनल की बात कर ली है तो यूसीएल की भी बात कर ही लेते हैं लास्ट में बिफोर रैपिंग अप सो यूसीएल बिग गेम वीक कमिंग अप एंड 4 क्वार्टर फाइनल है लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जैसे आपने बोला अभी मेंशन किया मैड्रिड वर्सेस बायर्न इज द टॉप ऑफ द टाउन एंड 2-1 का लीड है ऐसा लीड है सर कि जहां पे कुछ भी हो सकता है जैसे आपने बोला कि बायर्न शुड हैव किल द टाई इन द फर्स्ट लेग और इवन फर्स्ट 45 मिनट ऑफ द गेम. So how do you see this match? Because Madrid lost their draw their match in the league, and their main player, I think Jude Bellingham and Militao will start most probably in this match. So how do you Bayern is going to approach this game? Because it's a one goal lead, so I think it's a double mind game. On one side, it's a double-minded game, but it's Bayern Munich at home. If you see how they Mm. beat St. Pauli on the weekend 5-0, and 6-0 was actually scored, but that was then offside from Goretzka. They showed what class they have. I think Bayern Munich as a team can only beat themselves. That is the thing. And if Bayern score one, I don't see Real Madrid scoring two or even three. So therefore, that's the point to me. Yes, Real Madrid can score one, but Bayern in that form with Harry Kane, look at the way Olise played in Madrid. But look at if anyone wants to watch him against St. Pauli, brilliant. So therefore, for me, Bayern Munich favorites to go through, not only because of the result in at the Bernabeu, but yeah, But I think it's Bayern Munich all the way. एक चीज मैं इस मैच में बोलना चाहूंगा सर जैसे आपने बोला कि इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस वाइज या इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म वाइज एट द मोमेंट बायर्न इज लुकिंग फेवरेट बट मैड्रिड का हमने हिस्ट्री देखा है पर्टिकुलरली अगर आप पिछले 10 साल का उठा के देखेंगे कि उनका इस तरीके के मैचेस में अगेंस्ट बिगर ओपोनेंट यहाँ पे चाहे उनके मेन प्लेयर ना चले हमने देखा है कि कई बार आई थिंक 2-3 साल पहले जिस तरीके से ऑफ द बेंच आके प्लेयरों ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला था आई नेवर सीन फॉर अदर क्लब की जो बेंच से आके प्लेयर इस तरीके के बड़े मैच में उस तरीके का मोमेंट प्रोड्यूस करते तो आई थिंक मैड्रिड ऑलवेज हैज दैट यू कैन से कि दैट बिलीफ कि भाई हम हमको निकाल लेंगे बट आई थिंक अगर बायर्न अपना आई वुड से कि जिस तरीके से फर्स्ट लेग में खेला था वैसा खेलेंगे आई थिंक इट विल बी कंफर्टेबल टू गो इनटू द नेक्स्ट राउंड बट मैड्रिड को आप कभी रूल्ड आउट नहीं कर सकते ये बात तो है एज अ राइवल फैन भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है सो आई एग्री And they showed it against City. The only thing is Real Madrid has a good first leg result, be it a draw or a win, and then can build on that in the second game. This time, Bayern Munich won. First time since 2001. Or two, so therefore all these things are adding up. But again, football is a crazy game, but I would hope Bayern reach the semifinals. Then let's talk about some other you can say कि quarter final also there is a Barca Atletico which is also going to be really interesting वहाँ पे सर मैं अभी देख रहा था कि 2-0 का लीड आई थिंक मेरे को लगता है कि नॉट फ्रॉम द बारसा फैन पर्सपेक्टिव बट आई थिंक अगर हम सिमियोने के पर्सपेक्टिव या फिर एटलेटिको के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक या 2 गोल की लीड ऐसी होती है कि जहाँ पे जो अभी बोल रहे हैं ना लोग कि भाई वो बस पार्क कर देगा आई डोंट थिंक सो कि यू कैन डू दैट बिकॉज उस केस में भी आपके पास एक खतरा है कि भाई अगर सामने वाली टीम ने एक गोल मार दिया तो ऑलवेज यू ऑन अ रिस्क कि भाई अब हम यहाँ पे कैसे रिकवर करें तो आप इस मैच को किस तरीके से देख रहे हो कि भाई 2-0 की लीड है तो भाई एटलेटिको जरूर भाई पूरा डिफेंसिव जाएंगे या फिर इट विल बी अप्रोच कि जहाँ पे बारसा विल आल्सो हैव अ यू कैन से कि स्पेस टू अटैक द एटलेटिको These two teams have played each other so often over the years, and also this season. There have been crazy results this season as well. and all high scoring All high scoring. So I think whoever scores the first goal, that team is gonna most likely win. So if I Barca also get that, if Barca get a goal,
they can win 3-0 at the Metropolitano. But if Atletico make it 3-0 on aggregate, match khatam. Khatam. I think I so. agree. But again, so therefore, yeah. And the point, Hansi Flick in the Champions League with Barca has not gotten the results in the big matches. So that is another problem. So they Yeah, that I agree. I think वो काफी क्रूशल पॉइंट है, जो एक आई थिंक हांसी फ्लिक का अभी तक का इस टेन्योर का बारसा के साथ एक जो आई वुड से कि चीजें जो क्रैक नहीं कर पाए हैं वो वही है. सो आई थिंक दिस इज द हर्डल ही नीड टू क्रॉस, एंड अगर आई थिंक ये कर जाते हैं देन टीम में भी आई थिंक वो बिलीफ आ जाएगा फिर. बट आई थिंक इट्स गोना बी रियली रियली एंटरटेनिंग मैच विदाउट अ डाउट. देन देयर इज वन अनदर मैच एंड दैट इज पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, जो कि मेरे को लगता है कि टाई किल हो चुका है, बट इट्स अ 2-0 लीड फॉर पीएसजी गोइंग टू लिवरपूल. सो डू यू थिंक कि लिवरपूल जिस तरीके से प्रीमियर लीग में उनका सिचुएशन है, या फिर एक एक में मेरे को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि भाई लिवरपूल के खुद फैंस चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो जाए, ताकि आर्ने स्लॉट चला जाए, क्योंकि दैट इज द फाइनल यू कैन से कि नेल इन द कॉफिन. So how do you see this match? reality is PSG could have won 5-6-0 against Liverpool, right? First leg. And it's the Bayern Munich Real Madrid situation. Result acha hai, but it could have been better. Now, this is also an interesting one. Liverpool, Anfield, floodlights, Champions League music. You will not like it. You remember Barcelona, no? 3-0 ahead and then they lose, right? So therefore, this team has that potential of LFC. But also PSG at this time of the year, Ligue 1 has moved around matches. They are rested, this, that, everything. Their attacking line is just too good. So, but again, and this is another game. If Liverpool can go up 1-0, then I'd like to see what PSG does. Are they really as good as we think they are? Or can Liverpool get something out of this? एग्री. एंड जो लास्ट मैच है स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल की, जिसका इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा, या फिर जितना उतना ज्यादा बात नहीं हो रहा फैंस में, बट आई थिंक दैट इज अ रियली रियली ट्रिकी गेम. मतलब 1-0 का ही आर्सेनल के पास लीड है, नो डाउट दे आर प्लेइंग एट एमिरेट्स एंड एवरीथिंग, but I feel ki Sporting has a chance, sir. I think there is a slightest chance, and we have seen this thing in Champions League कि भाई छोटी टीम या फिर आपसे थोड़ी सी क्वालिटी वाइज लोअर लेवल की टीम इस तरीके के मैच में स्टेप अप कर जाती है. Look at the last round of the Champions League of Sporting. Sporting Club de Portugal was 0-3 behind against Bodo Glimt. And we all thought the Bodo journey goes on into the quarterfinals. Sporting came back and won 5-0 extra time at home. We spoke earlier on about Arsenal and its form. Acha nahi hai. If Sporting learns a few things from Bournemouth, and I think Arsenal football-wise is scared. Very unusual, right? They are scared of losing something. That is the opportunity for Sporting Lisbon. Tumhara talent hai, you've got young, interesting players. There are a lot of players who want to showcase also themselves for bigger clubs in Europe. The Emirates is your opportunity on Wednesday night. And as you say, 1-0 Arsenal, yes, advantage, but it's not over. So big UCL nights coming up for the fans, and that's it from our side दोस्तों. I hope कि आपको हमारी कन्वर्जेशन अच्छी लगी होगी, एंड इसी तरीके से दोनों चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अरुण फुट एंड क्यूरियस एरी को, एंड आगे भी आपको इसी तरीके से हर मंडे को इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन जो भी फुटबॉल में चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडियन फुटबॉल लाते रहेंगे. शो योर सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय. Bye everyone.